अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं विद द ईयरली पास पेपर्स। तो आप लोगों को पता है कि आफ्टर ईद देयर इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन सेशन व्हिच इज गोइंग टू डील विद solely 2023 के पास पेपर्स, द इम्पोर्टेंट पार्ट्स रिलेटेड टू ओ लेवल के भी पेपर्स। P2 P4 is what we are going to be looking at। इस तरीके से IGCSE का भी जो हमारा इक्विवेलेंट P2 P4 होता है। खैर हमारा P2 is their P4 and हमारा P4 is their P6, so there's like a difference of 2। तो वो भी फिर हम लोग बाद में देख रहे होंगे। So 2023 तो टाइम के साथ होता रहेगा। 2024 IGCSE is out by the way if any of you use Reddit। तो Reddit पे 2024 IGCSE is out। uh, I'll be publishing a video solution to that as well on my YouTube। तो वो सारे लेटेस्ट वाले होते रहेंगे। अभी सिर्फ जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ डूइंग दीस पेपर्स। फर्स्ट टुडे वी आर स्टार्टिंग विद समिट 22 मई जून 22। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। So 1.1 shows a water skier pulled horizontally across the water surface. Mass of the skier is 60 kg, small g is 10। Just to get a hang of using this value, हम लोग ये लेकर काम करते हैं। So mass of the water skier is 60, small g is 9.8। Calculate weight, बहुत ही आसान। W equals mg। सीधा सीधा 60 times 9.8 is going to be your answer। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बता दें ये कितना आ रहा है। $588। All right, so 588 Newton। Very straightforward। Usually first question is straightforward unless अगर examiner कुछ kinematics का कुछ बहुत ही टेढ़ा सा दे दे। Mass and weight have different units। State two other differences between mass and weight। Again, if you guys remember your class notes, मैंने आपको mass weight के दरमियान I made you guys write 4 differences। One is stated here, you can choose from any of the other 3। The first one I'm talking about is in terms of the direction। तो मैं कह रहा हूँ mass is a scalar, weight is a vector। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। ये ना समझे कि these are two differences, this is one difference which was on the basis of direction। Mass does not need a direction, weight does need a direction। दूसरा वाला I'm writing this। ठीक है, so mass is mass। हम यही कहते हैं कि if there is something on the earth or on the moon, उसका mass is the same। So if we take this water skier to the moon, his mass would still be 60 kg, लेकिन weight would change because हमें पता है small g gravitational field strength changes with very huge changes in the location of an object। ठीक है, अच्छा, इसके बाद a boat pulls the water skier to the right with a horizontal force of 50 Newton। The water skier travels at a constant speed। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का वर्ड अगर आपने देख लिया फोर्सेस की जुबान में या काइनेमैटिक्स की जुबान में, आपके यही वर्ड देखकर यू शुड बी थिंकिंग अबाउट समथिंग। आप समझे कि अगर सिर्फ वाकई ये 50 न्यूटन की फोर्स होती यहाँ पे विच इज पुलिंग दिस गाय टू द राइट, so we know that he would accelerate। But right now, if he's not accelerating, if he is actually moving at constant speed, इसका मतलब है there must also be a backward force of 50 Newton to cancel this out। How did I get this? Newton's first and second laws। If there was actually only 50 Newton acting on him, then there would be a resultant acceleration towards the right as well।
But if there is no acceleration and if this is actually constant speed, this means that forces must have been balanced. All right. So explain in terms of the horizontal forces acting, why the speed is constant. So I will say horizontal, or even better, I would say force to the right is opposed by an equal force to the left. So resultant force is zero. So resultant force is zero. और अगर आप कहना चाहें यहाँ आगे, you can also say this, and there is no acceleration. Right? This is just a very, very detailed answer to this. ठीक है, ये हो गया. Horizontal force acting to the right increases from 50 to 70 Newton. Sizes of any other forces are unchanged. अब any other force में वो वाला force भी आ जाता है left पे, जो कि आप यहाँ कह सकते हैं that this was air resistance या this was drag due to the water. वो सारी forces जो हैं, इसको ये कह रहे हैं other forces में, he is categorizing those. Calculate the acceleration of the water sphere. So we know that resultant force is ma. So if somebody who's not studied with me the entire year, और अगर वो ये symbol देख रहा है, please don't be confused by this. ये जो symbol है, this just means sum. ठीक है? I do this so that people remember that this is net force. All right. All right. So just a sec. Let's point this out here. All right. So acceleration निकालना है हमने. So resultant force, there's 70 to the right. और उसने कहा resistive force is still the same. So this is still 50 to the left. Mass ऊपर दिया हुआ था. This was 60. This is A. So this is simply going to be 20 equals 60A. So A would be 20 over 60, which is a recurring fraction 1 over 3. Lekin never give your answers in physics in fractions. Always give them in decimal places, in decimals. So again, in physics, you can always give your answer as a safe rule of thumb. You can always give this to 3SF or to 2SF. So here, this is 0.33. Unit is a part of the answers, 0.33 meters per second squared. All right. Now this next question, question number 2, 2.1 shows a long cardboard tube sealed at both ends which contain many small pieces of metal. The tube is turned vertically so that the pieces of metal fall from one end to the other. The temperature of the pieces increase as a result of the fall. During the fall, the GPE of the metal pieces is transferred to other forms of energy. Say two forms of energy to which GPE is transferred. अब ये गिर रहा है, इसने आपको यहाँ पर बता भी दिया टेम्परेचर बढ़ रहा है. So we know that as anything falls from a height, as this would, when this is basically stood on this base, so they would fall, they would gain speed because of the acceleration due to gravity. So it will definitely go towards kinetic energy. And if you read the question, temperature increases. So this means the internal energy, या heat कह लें, या thermal energy कह लें, that also increases. ये again थोड़ा सा पुराने syllabus का है, so some terms you might even not have recognized this. is के some पुराने syllabus वाली terms use हुई हैं. अगर आपके syllabus में ये सवाल आएगा आपके papers में, so वो forms की जगह वो word use करेगा stores का.
ठीक है, this is like the lingo your new syllabus uses. Now, pieces for an average distance of 1.2 meter during one turn. Total mass of the metal pieces is 150 grams. Calculate loss in GPE of the pieces as they fall once. And then they have given a small g. Again, let's cancel this out and work with 9.8. So loss in GPE, EP is MGH. ठीक है, PE भी लिखें, कोई मसला नहीं. Examiner is not concerned with symbols. He's more concerned with the answer. Mass is in grams. If you want to give your answer in the standard SI units, you need to make sure everything you plug into your formula is also in the SI units. Grams is not the SI unit, kg is, so I divide by 1000. Small g is 9.8. And the height h, let me just do it like this. H is 1.2. All right. So again, if you just calculate this, so 0.15 times 9.8 times 1.2 is 1.764. Again, whenever your answer goes beyond 3SF, it's your job to round this back down. So you can give this as 1.76 joules. All right. A student turns the tube quickly after the small metal pieces have fallen from one end to the other 80 times. The temperature is increased by 7. Determine SHC of the metal. Now, this tube is now to be turned 80 times. When these pieces of metal are flipped over 80 times, so basically they lose 80 times this energy because this is for one fall, right? अब जब ये 80 times गिरेंगे, so 80 times this energy is now going to be converted into the thermal energy, जैसा कि अभी हमने ऊपर आंसर में लिखा है, which causes the temperature to increase. Determine SHC of the metal. So I know that the GPE is basically going to turn into the thermal energy. ठीक है? So this is 80 times 1.76. Thermal energy का formula. Again, this is something you guys need to remember. So specific heat capacity, the formula is MC delta theta for the energy. So Q कह लें, E कह लें. The new syllabus just calls this E. E equals MC delta theta. M आपको पता है. Say you have the mass. Again, SHC आपने निकालना है. ठीक है? If you want to, again, with this, there is basically an option that you have, what units do you want to give with SHC? ठीक है? SHC is specific heat capacity, by the way. I want to go with the classic units of kg per joules per Kelvin, या kg per joules per degree centigrade. So I'll again convert this to kg. So 0.15. C मुझे चाहिए, और delta theta is given to me as 7. सही है? So now if I calculate this, so 80 times 1.764 I guess. 0.15 times 9.8 times 1.2. 0.15 times 9.8 times 1.2 times 80 divided by 0.15 divided by 7 is 134.4. So yeah, so 134. Again, units are very, very important. अगर यूनिट में आपको मसला है, इस फॉर्मूले को फिर से रीअरेंज करके C को सब्जेक्ट बना के, look at how this would go. So C would be E over M delta theta. E is in joules.
पर क्योंकि डिनोमिनेटर में बाकी चीजें, मास इज इन केजी एंड थीटा हियर इज इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है। So this is how we find this one out. All right, part three, look at this. The student repeats the experiment, turning the tube more slowly. Suggests why a different temperature increase is obtained. So now he does it again, but now he does not turn the tube as fast. Why a different temperature increase is obtained? What would be the answer to this? Again, there are a range of answers. Suggest wale parts I've told you guys about this. This is something that you need to think according to the scenario, right? It's not going to be the same each time. क्या ख्याल है? Suggest why a different temperature increase is obtained. So देखें again, there are a lot of options. You can say that the masses do not fall the full distance is what I'm thinking of, because now these pieces would just slide along the tube, right? This is what I'm thinking. So masses slide along tube and do not fall the full distance. इसके अलावा you can also say this in different ways. You can say that again, the question just says different temperature increase. It does not say more, it does not say less. So it's up to your imagination exactly what you want to say here. All right, 2 is done. Let's move on to 3. 3.1 shows a syringe mounted vertically in a block of wood and sealed at one end. A plunger is free to move inside the syringe. There is trapped air in the syringe. The air inside the syringe exerts a pressure on the walls of the syringe. Define the term pressure. First one, pretty easy. Force divide by area कहते हैं, force per unit area कहते हैं. Both of these are correct. ये चीज मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है in very detail when we talked about KMM at first. Explain how the air molecules in the cylinder of the syringe create a pressure. So how do they create a pressure? First of all, the thing you need to know is that these molecules are going to move at random, right? So molecules moving at random. This is the basic postulate of क्या कहते हैं kinetic model of matter. This is like when one of the very first statements it presents is that molecules are moving at random. ठीक है? We cannot predict what direction this is. This is what is meant by random. So then these molecules collide with the walls of the container. अब again, this is a older syllabus question. So it might not be necessarily included in the mark scheme for this, but it could also be a question कि जैसे अब आपके syllabus में you guys have studied momentum. So the question says, explain how the air molecules in the cylinder of the syringe create a pressure and explain your answer with reference to momentum. And now you guys know that in this chapter of momentum, हमने collisions की बहुत बात की है. So molecules collide with the walls of the container. The next thing I would say is they experience a change in momentum.
and exert a force on the sides of the walls leading to a pressure. 3 mark questions are like the max number of marks you can have in any one part. So make sure कि आप इसमें full detail में. सही है? So first point, moving at random. Second point is regarding collisions. और फिर collisions है how you link it to force and pressure. All right. A 10 Newton weight is placed on top of the plunger. The plunger moves down slowly so that the temperature of the air inside the syringe does not change. याद करें इसकी भी बहुत तफसील में हम बात कर चुके हैं. Whenever we talk about gas laws, basically के pressure, volume temperature, pressure temperature के relationships, there are two things that must always be constant. One is the amount of mass in the gas, that must be the same for us to talk about those laws. And the second thing is that if you're talking about any two variables at once, the third one must be constant. Now I know this triangle of PVT. So yeah, I know this triangle. अगर वो मुझे कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, mentally I am prepared to know कि if temperature constant है, he's talking about, or at least he's going to talk about this relationship. Before the weight is placed on top of the plunger, the pressure of the air inside is this much, volume is this much, cross-sectional area is this much. And then it says calculate the pressure of the air in the syringe after the plunger stops moving. ठीक है. अब देखें मुझे उसने क्या दिया था, उसने मुझे फोर्स दिया हुआ है जो weight is going to be kept on the plunger, और उसने मुझे area दिया. So simply by using pressure equals force upon area, I can apply this formula and I can find out kitna pressure this weight applies on the syringe, and that's also going to be the pressure of the air, right? So if I just use P equals F over A, F is 10, A is 1.2 into 10 to the negative 4. So this turns out to be, so let's just take this here. So how much does this turn out to be? Because this is, so keep in mind, this is the increase in pressure. There was already some pressure inside. Okay. So ये कितना आता है? 10 over 1.2 into 10 to the negative 4. All right, 8.3 into 10 to the 4 pascals. ठीक है. And this is the increase in pressure. पहले pressure कितना था? ये वाला, just add this value. ठीक है. ये कैसे पता कि ये increase है? क्योंकि देखें ना, ये पहले pressure तो है आपके पास. This is the new increase because of the new weight which is placed. So when you add this, फिर क्या value आती है? 8.3 into 10 to the 4. Scroll up back again to what? All right. So 1.83 into 10 to the 5 pascals to 3 SF. Okay. Now they want me to calculate the volume of air inside the syringe after the plunger stops moving. अब volume निकालना है. I know pressure before, I know volume before. Now I know pressure after. I want to find the volume after. So P1 V1 equals P2 V2. So 1.0 into 10 to the 5 times 50 equals, again मैं अभी ये लिख रहा हूँ because this is what I did.
Usulan, you guys should be using your calculator values into the new volume. ठीक है? Now you just make V the subject. 10 to the 5 I can see वैसे भी cancel हो रहे. So 50 over this 1.833. Yes, 27.27. So 27.3 cm cube. All right, 3SF again. Four shows a ray of white light incident on a glass prism. Refraction causes white light to separate into different colors. Definition of angle of refraction. Again, pretty easy stuff. Angle between normal and refracted ray. ठीक है? Angle of incidence, angle between normal and incident ray. Angle of incidence of the white light as it enters the prism is 40 degrees. Angle of refraction is this much. Calculate refractive index of glass for red light. Show your work. तो हमें पता है n equals sin I over sin R. लेकिन later when we were doing light मैंने आप लोगों को इसका एक और शक्ल बताई थी, which is what you must use, which is sine of angle in air over sine of angle in medium. दूसरी फॉर्म क्यों बताई थी? बिकॉज कुछ सवालों में, इसमें तो ये मसला नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सवालों में क्या होगा कि वो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा केस भी प्रेजेंट हो सकता है जहां पे लाइट इज मे बी गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. सही है? तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर भी आप एयर वाला ही लेंगे. Say numerator में there's always sign of angle in air, denominator में there's always sign of angle in glass. So sign of angle in air, so this is as it enters, so that's sine 40, or in glass it's 25. So sine 40 over sine 25. So this turns out to be pretty close to 1.5. I guess it's 1.52, I think. But yeah. All right. Next part. Using 4.1 state and explain how the refractive index for red light differs from the refractive index for violet light. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों को मसला होगा. दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन. ये जो 2 मार्क का एनालिसिस वाला पार्ट. सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हाउ कैन यू इवन गो अबाउट डिस्कसिंग दिस. अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, यू गाइस कैन ऑब्वियसली यूज साइन आई ओवर साइन आर. अगर मैं आपसे विजुअली पूछूं कि भाई यहाँ पे किसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, so you will say that there is a smaller angle of refraction for red, larger for violet, but this is wrong. ठीक है, वापस बता दो. मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखें, रेड और वॉयलेट की बात करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा है? यू गाइस माइट बी टेम्प्टेड टू से कि रेड लेस बेंड कर रहा है तो रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा होगा. ये गलत है. इस वजह से, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपन व्हेन यू डू नॉट ड्रॉ द नॉर्मल. अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो अब आपको सब सही से नजर आ जाएगा. नॉर्मल बना दिया, ये 90 डिग्री हो गया. अब खुद देखें गौर से, कौन सा एंगल ज्यादा है, ये वाला या ये वाला?
रेड वाला ज्यादा है, सही है। सो साइन आर इज गोइंग टू बी मोर फॉर द रेड वन, ठीक है। साइन आर बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है। This is one way to talk about this. Another way to talk about this is also using this formula, if you remember. N equals to C over V. ये भी एक और तरीका है। इसमें आप क्या कह सकते हैं? इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपको पता है C is the speed of light in air, V is the speed of light in some given medium. आपको पता है रेड क्यों कम बेंड करता है? इज बिकॉज रेड स्लो डाउन कम होता है, ठीक है। व्हाट स्लोज डाउन मोर आल्सो बेंड्स मोर। सो इसकी अगर हम बात करेंगे रेड के लिए, तो इसका V बड़ा है, सही है, और इसका N जो है छोटा होगा अगेन। तो ये, so two different reasonings again give you the same answer. You can write either one of these. First line of reasoning is this, that angle of refraction is larger for red. So refractive index is smaller. दूसरा line of reasoning is this, that speed of light is greater for red. So ये तो इसका मतलब है आपका जो V है इस फॉर्मूले में, V आपका ज्यादा है, तो अगेन N कम हो जाएगा। So refractive index is small. Say, please be warned that I'm talking about the refractive index for red here. This is for red. ठीक है, रेड लाइट की बात कर रहा हूं। Okay. Sources of white light used in 4.1 produces other types of EM radiation as well as visible light. State the name of invisible radiation found at P and invisible radiation found at Q. ठीक है, यहां पे कौन सा होगा? यहां पे कौन सा होगा? इनविजिबल रेडिएशन का है, सो यू कैन नॉट से कलर्स एनीमोर। ठीक है, वैसे भी कलर हो नहीं सकता है, बिकॉज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कलर इज रेड, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज दिस। वायलेट के बाद जो कंपोनेंट आता है, अगर आप ईएम स्पेक्ट्रम के नाम पे फोकस करें तो आपको पता चल जाएगा। वायलेट से ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले को अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, और इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले को इंफ्रारेड कहते हैं, सही है। अगेन मेमोराइज दैट mnemonic. So P is infrared and this is ultraviolet. So ये violet से ज्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है, that's ultraviolet. ठीक है। 5. Student connects a battery, thermistor and resistor in parallel. EMF is E, current is I. Resistance of Y is greater than the resistance of X. ठीक है। So resistance of this fixed resistor is greater than the resistance of the thermistor. अब मुझे पता है कि अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसके थ्रू करंट कम फ्लो कर रहा होगा, सो जो भी ये करंट होगा दिस इज गोइंग टू बी लेस देन आई। ठीक है। टिक 2 boxes टू शो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई। सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट है, सबके अक्रॉस ही सेम हो, सो अक्रॉस वाई और अक्रॉस एक्स इट्स इक्वल टू ई। ठीक है। करंट इन वाई, अभी हमने कहा रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसका करंट कम होगा, इजी। Student connects thermistor X in series with the resistor Y and an EMF of 6 volts is shown.
In this circuit at room temperature, the resistance of thermistor X is 600 ohms. Current in the thermistor is 0.002 amperes. अब आपको पता है this is a series circuit, तो जो भी current इसने आपको दिया है, this will apply to all components. ठीक है? उसने आपको दिया resistance of thermistor X is 600 ohms. Calculate the power produced in the thermistor. So again, power के आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं. हर बार आपने ये सोचना होता है कि मुझे क्या चीज दी गई है which is going to make my life as easy as possible. मेरे पास फॉर्मूले हैं P equals VI, P equals V square over R, P equals I square R. यहां मुझे I पता है, I know I know R. Let's just use I square R. I square R 0.0020 squared. Resistance is 600. You just multiply. Okay. All resistance of Y. अब resistance of Y के लिए क्या करेंगे हम? You guys know the voltage. You guys know the current. So you can first find total resistance. So yeah, सीधा V over I. So 6 is the voltage. I is the current. So you can find the total resistance. Okay. This turns out to be 3000 ohms. आपको पता है the way series resistors and series are added is that just the resistances are added. ठीक है? So 600 plus this thing that I want to find should equal 3000. So my answer would simply be 3000 minus 600. It's going to be 2400 ohms. So here, please be very particular about the units in O levels IGCSE. This is part of the correct answer. 2400 लिखा है, ohms नहीं लिखा है, mark कट जाएगा. ठीक है? The thermistor is cooled. Explain why this causes the potential difference across Y to decrease. Thermistor को cool किया गया है, तो वो कह रहा है इसका potential difference decrease क्यों होगा? Again, इसमें आपके पास 2-3 ideas of reasoning होते हैं. You guys know how much I love the voltage divider rule. That's what I'm going to take in this question. So yeah, उस approach से मैं जाऊंगा. So I know thermistor is cooled. So the first thing I will say is that as the thermistor is cooled, the resistance of the thermistor increases. So yeah, thermistor, LDR both have negative relationships. What does that mean? That means that if one thing increases, the other thing falls. In the case of the thermistor, if temperature increases, resistance decreases. In the case of the LDR, if light intensity increases, resistance decreases. So resistance of thermistor increases, voltage of thermistor also increases. But for the sums of the voltages, to be constant, voltage across Y decreases. ये एक possible reasoning है. You can also do many more. You can also say that resistance increases. So temperature resistance increases, current decreases. So by V equals to IR, the voltage would decrease. ये भी कह सकते हैं. ठीक है? So potential difference या जो voltage है, मैंने यहाँ ये कहा है कि this increases of X.
so it should decrease across y. All right, done. आगे चलते हैं 6 की तरफ. 6.1 shows part of a toy which contains two ring-shaped permanent magnets. A plastic rod passes through the center of both magnets. Top magnet can move Top magnet can move up and down freely around the plastic rod. Magnetic poles on the bottom magnet are shown in 6.1. Top magnet floats in the air above the bottom magnet. So it's not sticking together, it just floats. On 6.1, mark the poles on the top magnet and explain why it floats in the air above the bottom magnet. आपको पता है कि अगर ये दोनों मैग्नेट हैं, so they could attract or they could repel. If अगर ये मैग्नेट की जगह एक आयरन रिंग होता, मुझे पता है this is just going to attract. That's how induced magnetism works. But if both are magnet, they could attract or repel. दोनों possibilities है. अगर ये अभी नहीं स्टिक कर रहे, इसका मतलब है लाजमी तौर पे they must be repel. So if there is a north at the top of the bottom magnet, इसके सामने यहाँ पे होगा north at the bottom. So north, north, north. ठीक है, इसी हिसाब से S, S, S. And explain why it floats in the air above the magnet. तो सीधी सीधी इसकी रीजन क्या है? आप कहेंगे like poles repel. ठीक है. Top magnet is replaced with a ring made of iron. Honestly, I haven't even seen this question. Explain why the iron ring sticks to the bottom magnet. अब ये stick क्यों कर रहा है? तो आप बोलेंगे कि भाई आयरन में इंड्यूस होगा मैग्नेटिज्म. तो इंड्यूस मैग्नेट कह लें या टेम्परेरी मैग्नेट कह लें. और फिर आपको अगले पार्ट में बताना है कि क्यों स्टिक करेगा. तो आपको पता है कि अगर स्टिक करेगा इसका मतलब पोल्स ही ऐसे इंड्यूस होंगे कि ये स्टिक कर जाए. ठीक है, सो दे मस्ट बी अनलाइक पोल्स. डन. प्रीटी इजी. अभी तक कोई इतना मुश्किल पार्ट नहीं आया हमारे सामने. While carrying a current passes at right angles through a piece of copper wire, through a piece of paper. 6.2 shows a cross in a circle where the current in the wire passes into the plane of the paper. ठीक है, इसने आपको बताया हुआ भी है, लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए. Sketch 3 magnetic field lines to show the magnetic field pattern around the wire. Show the direction of the field on your sketch. Again, इस पे भी हम लोग बहुत तफसील में बात कर चुके हैं पहले भी. These are going to be concentric circles. Examiner ने आपको बहुत space दी हुई है. Make use of all that space. ठीक है, आगे मेरे concentric circles एक मार्क मेरा हो गया. Into the plane of the paper है, so I point my right hand into the paper with my thumb pointing in, and now I curl my fingers. So this is going to point like this, 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 and this. And to show the decrease in magnetic field strength, मैंने increase in distance दिखाया है. किस तरीके से दिखाया है? ये फासला, ये वाला फासला उससे और थोड़ा ज्यादा है, ये वाला उससे और भी ज्यादा है. ठीक है, again make it as dramatic as you can. All right.
So पुराने पेपर में there used to be a section A, section B. A part 1 describe the motion of the car. Again, ये वाले सवालों पर भी मैंने आपको बताया है, always give a reference to the time. कौन से टाइम से कौन से टाइम बात कर रहे हैं. So I can identify 3 stages as can you. 1, 2 and 3. Right? First stage is 0 to 10 seconds. So 0 to 10 seconds में क्या हो रहा है? I see that the speed is increasing, but this is a special case, which is known as constant acceleration. सिर्फ डिस्क्राइब करने का मतलब है आप ये बताएं, आप वैल्यूज अभी कुछ नहीं कैलकुलेट करना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. सो 0 to 10 सेकेंड्स इसने कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट किया. 10 से लेकर 20 सेकेंड्स it has the same speed throughout, so I will say constant speed. You can also say zero acceleration, but this is an easier understanding. So a constant speed, uniform speed. और यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिख रही है तो आप इसका नाम लेना और 16 मीटर्स पर सेकंड. ठीक है. और फिर इसके बाद क्या है, 20 से 24. अगेन बिकॉज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो हमें पता है दैट द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन. ऑब्वियसली दिस इज स्लोइंग डाउन. I will say this is constant deceleration. ठीक है. अगेन मैग्नीट्यूड नहीं देना बिकॉज इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल फ्रॉम द ग्राफ. जो रेडिली अवेलेबल था ग्राफ से वो मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है. Using 7.1, calculate the distance traveled by the car during the 24 seconds of its motion. Show your working. 3 मार्क का सवाल है, डिस्टेंस निकालना है पूरे 24 सेकंड का. Remember not to use speed equals distance equals speed times time. That's only there for constant speed. ठीक है. It's up to you. I just like to do it all in one go. I'll just take this as a trapezium. Trapezium का ये वाला dimension is from 10 to 20, so this is 10. ये वाला dimension is पूरा 24. So 10 meters, 24 meters. Or this dimension, which is called the height of the trapezium, ये जा रहा है up to 16. So this is 16. ठीक है. Let's even remove this. Just talk about this numbers. So area of a trapezium is half into height into sum of parallel sides. So half into 16 into 10 plus 24. So 34 times 8, basically 272 meters. Next part, calculate the average speed of the car during its motion. Achha, section B mein, you have to do 2, but we'll do all. Average speed is a total distance over total time. ठीक है. Total distance is 272, total time was 24. You just do this. 11.33, 3SF, 11.3 meters per second. Now part 4. A second car travels at a steady speed. So its speed throughout is the same. It travels the same distance as the first car in the 24 seconds of its journey. Draw the speed time graph for the second car. Average speed का idea ही ये होता था कि if you want to cover this entire journey just at one speed, you have to go at the average speed. So what the examiner wants you to do is कि जो अभी आपने ये value निकाली है, इसके हिसाब से आप ग्राफ के ऊपर एक horizontal line बनाएं throughout. सही है? So let's locate 11.3 first. So this is 9, 10, 11, 12. So 11. So 11.3 is going to be somewhere in the middle.
सही है, फेयर इनफ। लेबल भी करके बता दें कि भाई ये वाली स्पीड पे हमने किया है अकॉर्डिंग टू आवर आंसर। Thinking distance is the distance traveled by a car between the time that a hazard is seen and the time that the brakes are applied. Braking distance is the distance traveled while the car slows down to rest. इस आपको thinking braking distances का table दिखाया है। Complete 7.1 can obviously see यहाँ पे अगर 7.1 को देखें so speed 20 से बढ़ रही है। Braking distance is not increasing by equal intervals. Thinking distance को देखें तो +9 फिर कुछ मिसिंग है लेकिन फिर +9। So obviously this must also be a +9 ka increment. So 18 plus 27. 18 plus 9 is 27. Time it takes for the driver to react to the hazard is constant at different speeds. Explain how the table shows this. So ये time वो बता रहा है for the driver to react is constant. Reaction time से corresponding distance कौन सा होता है? Thinking distance होता है। आप चाहें आप इसको वैल्यू से कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं या तो आप इसकी नॉर्मली भी बात कर सकते हैं। What I'm thinking about calculation कैसे होगी is v equals to d over t, so t equals to d over v कर दो। ठीक है, यहां मैं कोई से भी दो वैल्यू पेयर्स उठाऊं d over v, d over v, what you would find is कि इन सब में जो रिएक्शन टाइम है ये मेरा सेम आता है। ठीक है, दो तीन वैल्यूज के लिए इसको करके दिखा दे, एग्जामिनर को खुश करता है। या तो आप ये भी कह सकते हैं that you can just use proportionality, ये डबल हुआ ये डबल, सही है, ये 5 times हुआ ये 5 times हुआ, लेकिन do show some calculation with respect to the values in the table। ठीक है, so thinking distance is proportional to speed। और आपको बिकॉज आप सभी ओ लेवल मैथ भी दे रहे हैं तो आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये होती है कि दो चीजों का रेशियो सेम है। फिर मैं उसे ये बता सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू 45 over 100, this is the same thing as 36 over 80, is the same thing as 27 over 60, right? So you can say this is a constant ratio। All right, B part 3, state what happens to the thinking and braking distance when the driver is tired। Thinking distance को क्या होगा, because he is now going to react slower, thinking distance increase होगा, braking distance का driver के tiredness से कोई ताल्लुक नहीं है, so this is the same। ठीक है, all right। 8.1 shows the ripple tank and crests of water wave that is produced in it। Frequency दिया हुआ है, amplitude दिया हुआ है, they're asking for number of crests in 1.5 seconds। आपको पता है 2 hertz का मतलब होता है 2 waves in 1 second। So अगर मुझे 1.5 seconds का निकालना है, just multiply, that's going to be 3 waves। So yeah, 3 waves, 3 crests, examiner गए 3 wavelengths, it's all the same thing। Height of the wave is measured from the level of the undisturbed surface of the water। The height of the wave at one point is 0 at time t equals to 0। ठीक है, so I know my first point 0 0। I draw a graph to show how the height of the wave at this point varies। So हमें पता है कि frequency is 2 hertz। So if I just use this formula t equals 1 over f, so time is 0.5 seconds। So ये इसमें एक पूरा wave बनेगा। और amplitude इसने मुझे बताया है this is 3 mm। So ये amplitude mean position से। So 3 का मतलब this
और फिर 3 का मतलब ये वैल्यू होगी। सही है, तो आई एम जस्ट मार्किंग दीज पॉइंट्स। इसमें एक वेव बनेगा और फिर एक और सेकंड में एक और वेव बनेगा, और आधे सेकंड में एक और वेव बनेगा, और आधे सेकंड में एक और वेव बनेगा। एंड नाउ आई जस्ट डू इट लाइक दिस। This one should have been a bit more like this. But anyways, frequency of the wave is increased. Describe how the apparatus used in 8.1 is adjusted so that the frequency is increased. Apparatus में क्या खास बात है? यहाँ पे इसको रबर बैंड से सस्पेंड किया गया। ये कह रहे हैं मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो आप कह दें कि आई यूज अ लाइटर बार, या यू कैन ऑल्सो से यू मूव द बार अप एंड डाउन मोर। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं दैट यू मेक द रबर बैंड स्ट्रॉन्गर और टाइटर, ताकि ये तेजी से मूव करे। सो मैं कह रहा हूँ टाइटर या स्ट्रॉन्गर रबर बैंड्स। Describe what happens to the speed and wavelength of the wave as the frequency increases. Frequency बढ़ेगा तो as the frequency increases, all right. So हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, उसी मीडियम में बात कर रहे हैं। उस स्पीड को तो कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज। सही है, बट बिकॉज ऑफ v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, अगर f बढ़ रहा है तो लैम्डा को कम होना चाहिए, सो वेवलेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। Apparatus shown in 8.1 can be used to demonstrate refraction state. The additional apparatus needed to demonstrate refraction. आपको पता है कि आपको वो ग्लास ब्लॉक, ग्लास स्लैब चाहिए होता है, so that you can create regions of deep and shallow water. ठीक है, draw on 8.1 on 8.3 to show how the refraction, label a boundary where the refraction occurs. So again, pretty easy. मैं इसको पहले अपना ब्लॉक बना देता हूँ। अच्छा, रिफ्रैक्शन इसमें आपको दिखाना है। ठीक है, तो दिस इज द ग्लास ब्लॉक। आपको पता है इसके ऊपर वाला जो रीजन है, दिस इज गोइंग टू बी शैलोअर, एस एच शैलोअर, एस एच शॉर्टर। तो जब मैं इसको लेबल करूंगा, पहले मैं एक दो ऐसे दिखा देता हूँ, और उसके बाद ये जो है ये करीब करीब हो जाएंगे। सही है, तो शैलो में आया, वेवलेंथ शॉर्ट हो गया। ठीक है, only thing left is the boundary, so this is the boundary. All right, 8D का 1, so connection to internet, remote station using a satellite above Earth's surface. Data is sent between stations using microwaves. Station B is directly connected to internet using optical fiber. इसने आपको speed दिया है, distances दिया है, time for data to travel from A to B. ठीक है, तो ये this is twice the distance. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, V equals to D over T. So basically T equals to D over V.
So 560 kilometers, 560,000 और 3 into 10 to the 8। लेकिन मुझे पता है ये किसी एक स्टेशन का सैटेलाइट से टाइम है, इसको मैं टाइम्स 2 कर दूंगा। सही है। सो टाइम्स 2 कर दिया, सो ये आ जाएगा 0.0037 सेकेंड्स। Part 2, same data can be sent from A to B in a shorter time along the surface of the Earth using infrared waves to carry the information in optical fibers. State one property that infrared waves and microwaves have in common. आपको पता है ये EM spectrum का हिस्सा है। आप कह सकते हैं they both are transverse wave, they both can travel in a vacuum, they both travel at the speed of light. आप सारे कह सकते हैं। So they both are transverse waves. Suggest one advantage of using optical fibers to connect stations A and B directly. Optical fibers के आपके पास बहुत सारे फायदे होते हैं। In this case, अगर कोई यहाँ पे जवाब देना चाहता है तो you can say it's obviously cheaper than a satellite. लेकिन you can also say that there is more bandwidth, right? Faster data transmission. ये कह सकते हैं। It's also more secure. ठीक है? All right. How many are left? And this is the last one. 9. State how the structure of a helium atom differs from the structure of the helium ion. Atom और ion का क्या फर्क है? तो atom को इस केस में आपको ion दिया हुआ है, right? So it has lost one electron. तो आप बोले atom has one more electron, या बोले ion has one less electron. ठीक है, डिफरेंस पूछा। Suggest how the structure of an alpha particle differs from the structure of the helium ion. So alpha particle तो सिर्फ न्यूक्लियस होता है, सही, so it has no electrons. अब बोले alpha particle has no electrons. Straightforward. Part 3. A nucleus of thorium decays by alpha emission to a nucleus of element X. X then decays to Y by beta emission. Complete 9.1 to show the number of protons and neutrons in a nucleus of X and in a nucleus of Y. ठीक है, सबसे पहले देख ले, आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। आप जो डायरेक्टली निकालेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन नंबर, उससे न्यूट्रॉन्स डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो इस चीज को जहन में रखें, सवाल को गौर से पढ़ें। This value is obviously going to be 229 minus 4. This is going to be 225. इसी तरीके से this value is going to be 90 minus 2 is going to be 88. सही, तो x का मुझे number of protons पता है। Number of neutrons के लिए I would obviously have to do this minus this. So 225 minus 88. ठीक है, that is going to be 137. और फिर y के लिए, so now I know that x is 137, sorry, not 137, 225 and 88. ठीक है, फिर ये बन गया y, जाहिर सी बात है ये एक से बढ़ेगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So number of protons is 89. 225 minus 89 is now 136. All right, आगे बढ़ते हैं। Experiments can show that a sample of a material is radioactive. Describe apparatus procedure to show that the sample emits both alpha and beta particles. ठीक है, again you may draw a diagram, you don't really have to, just to save time मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, आपको पेपर में हमेशा बनाना चाहिए।
आप बोलेंगे कि भाई मैं गीगर मोलर ट्यूब और काउंटर का इस्तेमाल करता हूँ। वो कह रहे हैं आपने ये दिखाना है कि ये अल्फा बीटा दोनों जो है एमिट करता है। हाउ डू यू शो दिस? तो अल्फा को आप कह सकते हैं दैट यू यूज थिक पेपर, एंड इफ काउंट ड्रॉप्स दिस मीन्स इट emits अल्फा। ठीक है, सो काउंट अगर ड्रॉप हुआ तो इसका मतलब ये अल्फा है। और दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि फॉर बीटा यू यूज एल्यूमिनियम। ठीक है, वैसे इस केस में यू कैन ऑल्सो रेफर टू द क्लाउड चेम्बर। क्लाउड चेम्बर के ट्रैक्स में किस तरीके से वो फर्क होता है, जब वो वेपर कंडेंस होता है तो दोनों में किस तरीके से फर्क होता है, उनकी शक्लों में आप उसकी भी बात कर सकते हैं। State what is meant by the half-life of thorium. So I will say time for the number of atoms, या आप न्यूक्लियर भी कह सकते हैं, टू हाफ। ऑलराइट, ये अब एक हाफ लाइफ का सवाल आ गया। ऑल्सो आई जस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हाफ लाइफ आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में सिर्फ हाफ लाइफ ही थोड़ा ट्रिकी है, उसमें सारे टाइप्स ऑफ हाफ लाइफ क्वेश्चंस are included. A sample of pure thorium-229 contains this many atoms. After 22,000 years, number of atoms is now 5 into 10 to the 13. Determine the half-life of thorium. अब यहां मुझे हाफ लाइफ ढूंढना है। आई नो आई एम स्टार्टिंग आउट विद दिस। मैं इसको हाफ करता रहता हूं until I hit this number. So इसका हाफ would be 2.0 into 10 to the 14. इसका हाफ would be 1.0 into 10 to the 14. और फिर अगर मैं इसका हाफ करूंगा, this would be 5.0 into 10 to the 13. So this is 3 half-lives, which is equal to 22,000 years. So one half-life, okay, that's going to be 22,000 over 3. So yeah. So it's going to be 7,333. So 7,330 years, correct to 3SF. ठीक है, so this was this entire paper, summer 22. Homework के लिए you guys have to do, let me write, समर 22 का पेपर 23 आप लोग करें। आप लोग के जो सिलेबस में पेपर्स आते हैं, पेपर 23 एंड 21 आर द सेम। सो इफ यू डू पेपर 23 इज आइडेंटिकल। ठीक है, ये वाला आप लोग का होमवर्क। Try this out and then if you guys have any problems we'll discuss this in the next class. ठीक है, अल्लाह हाफिज।